Hello students, you are watching अजमल इंग्लिश स्टडी क्लासेस। आज हम क्लास 11th की पोएम फोटोग्राफ के MCQs देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। What were the two girls doing at the beach? बीच पे दो लड़कियां क्या कर रही थी? Running, resting, eating or paddling. So the correct option is paddling. Who was the big girl? शर्ली टॉल्सन, मदर, बेटी और डॉली। बिग गर्ल कौन थी? तो करेक्ट ऑप्शन होगा कि शर्ली टॉल्सन की मम्मी। व्हाट वाज द एज ऑफ द बिग गर्ल? बिग गर्ल की क्या एज थी? 12 years, 13 years, 14 years और 11 years. So the correct option is 12 years. 12 साल की एज थी बिग गर्ल की, दैट इज शर्ली टॉल्सन, पोइटिस की मदर। What for the three girls stood still? किस चीज़ के लिए वो तीनों लड़कियां खड़ी हुई थी? Talk, to eat ice cream, photograph or snapshot, waiting for their fathers. So the correct option is for photograph. Who took the snap at the beach? Mother, Dolly, father or uncle? बीच पे किसने फ़ोटोग्राफ्स लिया था? मदर ने, डॉली ने, फादर ने या अंकल ने? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ अंकल। विच थिंग हैज़ चेंज लेस ओवर द ईयर्स? इन इतने सालों में कौन सी चीज़ थी जो सबसे कम चेंज हुई थी? तो पोइटिस, बेटी, सी और द मदर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। जो समुद्र था, सी था, वो सबसे कम चेंज हुआ था। हु लाफ्ड आफ्टर लुकिंग एट द स्नैपशॉट? स्नैपशॉट देखने के बाद कौन हंसा था? मदर, अंकल, पोइटिस और फादर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B1, मदर। What were the three girls standing? Where were the three girls standing in the photograph? फोटोग्राफ में तीनों लड़कियां कहाँ खड़ी थी? सी बीच, रिवर बैंक, डेजर्ट और none of the above. So the correct option is C beach. What is the meaning of cardboard in the poem? Wardrobe, shelf, almirah or frame? कार्डबोर्ड का क्या मतलब है इस पोएम में? तो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेम। व्हाट वर द नेम ऑफ द टू गर्ल्स? दोनों लड़कियों का क्या नाम था? कैथरीन एंड केट, सिम एंड एनी, नैन्सी एंड ज़ेनानी, बेटी एंड डॉली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज D1, बेटी एंड डॉली। Name the literary device used in stood still to smile. Stood still to smile में कौन सी literary devices यूज़ हुई है? Simile, caesura, oxymoron और alliteration. So the correct option is alliteration because इनमें जो पहला वर्ड है वो S आ रहा है, तो इसलिए ये alliteration होगा। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन लेबर्ड ईज। लेबर्ड ईज में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है? एंजैममेंट, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरन या पर्सोनिफिकेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C1, ऑक्सीमोरन। लेबर्ड ईज जहाँ दो कॉन्ट्रडिक्टिंग या अपोजिट आइडियाज़ होते हैं तो उसको हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन साइलेंस साइलेंसेस। साइलेंस साइलेंसेस में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है? मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन। सिंपली अगर यहाँ सी वाला ऑप्शन नहीं होता तो इसका आंसर होता पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें दोनों ही तरह के लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। साइलेंसेस में अगर आप देखें तो दोनों वर्ड का जो पहला लेटर है S वो कॉमन है, तो इस तरह से वो एलिट्रेशन हो जाएगा। और पर्सोनिफिकेशन क्योंकि साइलेंस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन की, तो जहाँ
कोई नॉन ह्यूमन थिंग ह्यूमन क्वालिटीज़ को शो करता है तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? पोएम की राइम स्कीम क्या है? ए बी सी डी ए बी सी ए बी सी ई और द C1 A B C D E A B E or the blank verse. So the correct option is blank verse. Who is the poet? Poet कौन है? कमला दास, Robert Frost, खुशवंत सिंह और Shirley Tolson. So the correct option is D1, Shirley Tolson. Who washed the feet of the girls? गर्ल्स के फीट कौन धुलता है? द सी वाटर, फादर, मदर और अंकल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, ए, सी वाटर. विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन नंबर 1, 5, 10, 11, 12, 13 एंड 14 ऑफ द पोएम? कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई है इन लाइन्स में? सिमिली, एनचैम्पमेंट, एपिथेट और पुन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज B1, enchantment. Name the literary device used in terribly transient feat. Terribly transient feat में कौन सी literary device use हुई है? Oxymoron, metaphor, epithet और anaphora. So the correct option is C1, epithet. Now we take few extracts from this poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. Who were the two girl cousins? दो girl cousins जो थी वो कौन थी? The two girl cousins were the cousins of poet's mother named Betty and Dolly. What is the meaning of paddling? Paddling का क्या मतलब होता है? So the meaning of paddling is walking barefoot. नंगे पैर या नंगे पांव चलना, बगैर स्लीपर्स पहने हुए और शूज़ पहने हुए. हु वॉज द 12 years ऑफ एज? 12 साल की एज किसकी थी? सो द करेक्ट सो द आंसर इज पोएट्स मदर. All three stood still. Now we take the second extract. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's. That was before I was born. Which literary device is used in through there? Through there में कौन सा literary device use हुआ है? तो इन दोनों word में जो पहला letter है T वो common है. So the answer will be alliteration. Now what was the uncle doing with the camera? कैमरा के साथ अंकल क्या कर रहे थे? The uncle was taking snapshot. वो photographs ले रहे थे उन तीनों लड़कियों की. Whose face is mentioned here? किसके फेस की बात की गई है इस एक्सट्रैक्ट में? तो पोएट के मदर की फेस की बात की गई है. Who is I in the extract? एक्सट्रैक्ट में I किसको कहा गया है? I is referred to the poet. पोएट को कहा गया है. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived. And of this circumstance, who has been dead? कौन मर चुका है? Poet's mother. What is the meaning of the word this circumstance? This circumstance का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि it means death of poet's mother. Poet mother की death. Who is the poet? Poet कौन है? So the poet is Shirley Tolson. Now we take some short question and answers. What does the poet say about the sea? Sea के बारे में poetess या poet वैसे तो जो करेक्ट फॉर्म है वो poetess ही कहा जाता है किसी भी फीमेल पोइट को, लेकिन आजकल कहीं कहीं इसको पोइट भी वर्ड दिया जाता है. पोइट एक कॉमन वर्ड दे दिया जाता है फॉर फीमेल एज वेल एज मेल पोइट्स के लिए. She says that time changes everything, but it has no effect on the sea, as it has changed not much. Her mother is no more, but the sea is still there. Now the second question, the poet should
have said either 20 years or 30 years. Instead, she used both 20 and 30 years. Why? She said 20 or 30 years because she was not sure how many years have passed since their sea holiday. Why did the poet's mother laugh at the snapshot? She laughed at the snapshot because it was the memorable day of her life. What do you mean by terribly transient feat? Terribly transient feat का क्या मतलब है? It means that the three girls were energetic and excited to be there, and they were always moving along the beach while the sea water washed their feet. Explain briefly. It's silence silences. It means that the photograph was silent, and so the poet and her room seems that all of them were in grief. Why were the girls there on the beach? Beach पे लड़कियां क्यों थीं? They were at the beach to enjoy their holidays. They were continuously walking on the beach. They had fun there. Now the last question of this poem. Explain briefly. Smile through their hair. It means the three girls stood still for a few seconds to have a snapshot while the wind blew their hair, and through it one could see the happiness and a smile on their faces. So that was the MCQ short answers and extract from photograph. So please like, share my video and subscribe my channel. See you again. Bye.